हाई प्रोफाइल बने वैसे दुष्कर्म केस में फरियादी हॉस्टाइल बनी है, जहां नामचीन वैसे सीए अशोक जैन तथा पावागढ़ के पूर्व ट्रस्टी राजू भट्ट पर दुष्कर्म करने के लगाए गए आरोप के बीच आखिरकार फरियादी हॉस्टाइल बनते हुए उसके द्वारा कोर्ट में जुबानी देने के साथ उसके साथ दोनों ने कोई भी दुष्कर्म नहीं किया वैसा बयान देते हुए कई तरह के तर्क और वितर्क पैदा हुए हैं। हाई प्रोफाइल दुष्कर्म केस में फरियादी हॉस्टाइल बनने के साथ शहर में एक चर्चा का जोर पकड़ा है। वडोदरा की कोर्ट में पीड़िता वैसी फरियादी ने जुबानी देते हुए मशहूर सीए अशोक जैन तथा पावागढ़ के पूर्व ट्रस्टी राजू भट्ट ने उसके साथ कोई भी दुष्कर्म नहीं किया वैसा बयान देने के साथ कई तरह के तर्क और वितर्क पैदा हुए हैं। जाहिर सी बात है कि सितंबर 2021 में घटित हुई वैसी हरियाणा की लड़की के साथ कथित बलात्कार के केस में नया मोड़ आया है। हाई प्रोफाइल केस में पीड़िता वैसी कोर्ट में हॉस्टल होने के साथ चर्चा ने जोर पकड़ा है। उसके हॉस्टल होने के पीछे भी कई तरह के तर्क और वितर्क पैदा हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि शुरुआत के दिनों में ही रुपए की लेन देन के भी आरोप लगे थे। ऐसे में अब फरियादी हॉस्टल होने के साथ हाई प्रोफाइल दुष्कर्म घटना ने चर्चा का जोर बनाया है। जाहिर सी बात है कि 2 साल पहले कोरोना काल के दौरान हरियाणा से आई हुई वैसी लड़की वडोदरा में LLB का पढ़ाई करने के लिए आई थी। कोरोना काल में रहने तथा अन्य सुविधा के लिए एक होटल संचालक के संपर्क में आने के बाद शहर के मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक जैन की ऑफिस में वो काम करती थी। दौरान लड़की ने गोत्री पुलिस स्टेशन में सीए अशोक जैन तथा पावागढ़ के पूर्व ट्रस्टी राजू भट्ट ने दुष्कर्म किया होने के आरोप लगाते हुए सनसनी मची थी। उस वक्त फरियादी तथा अपराधी अशोक जैन तथा राजू भट्ट के साथ अश्लील वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुए थे। सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद शहर में चर्चा ने जोर पकड़ा था। ऐसे में लड़की ने गोत्री पुलिस थाने शिकायत में गंभीर आरोप भी लगाए थे कि सीए अशोक जैन तथा राजू भट्ट द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने के साथ सृष्टि विरुद्ध का कृत्य भी किया गया है। शहर क्राइम ब्रांच द्वारा गिनती के ही दिनों में चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक जैन तथा पावागढ़ के पूर्व ट्रस्टी राजू भट्ट को गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त फरियादी ने कोर्ट के समक्ष निवेदन भी दिया था। तो वहीं अब बहुचर्चित बने वैसे केस में फरियादी पीड़िता हॉस्टल होते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक जैन तथा पावागढ़ का पूर्व ट्रस्टी राजू भट्ट ने उसके साथ कोई भी दुष्कर्म नहीं किया गया है वैसा बयान देने के साथ कई तरह के तर्क और वितर्क पैदा हुए हैं। ऐसे में फिलहाल जेल में सजा काट रहे वैसे पूर्व ट्रस्टी राजू भट्ट को भी जेल से बाहर आने का एक और आस जगी है। तो वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक जैन फिलहाल जमानत पर मुक्त किए गए हैं। दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद जेल में भेज देने के बाद केस की ट्रायल चल रही थी। दौरान पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष ऐसी जुबानी दी कि उसके साथ अशोक जैन या तो फिर राजू भट्ट ने कोई भी दुष्कर्म नहीं किया। कोर्ट ने निवेदन को दर्ज करने के साथ पीड़िता को हॉस्टाइल घोषित किया है। સપ્ટેમ્બર 2021 ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક ફરિયાદ નોંધવામાં આવેલી હતી। વડોદરા શહેરના નામાંકિત ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અશોક જૈન અને રાજુ ભટ્ટના વિરુદ્ધમાં જે કેસમાં નામદાર કોર્ટ સેશન્સ કોર્ટમાં હવે કેસ ચાલવા ઉપર આવ્યો, બોર્ડ પર આવ્યો છે અને એમાં જે ભોગ બનનાર છે એમને કોર્ટ દ્વારા સમન્સ ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યું હતું એમને જુબાની લેવા માટે। અને જ્યારે બેન કોર્ટમાં આવ્યા ત્યારે એમને કોર્ટ સમક્ષ જે કંઈ સાચી વિગતો હતી એ એમને જાહેર કરી અને સાચી વિગતે જે અમે શરૂઆતથી કહેતા આવ્યા છે કે આમાં ક્યાંક કશું ખોટું છે અને બેનનો ક્યાંક ખોટી રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે એવી જ કંઈક હકીકત નામદાર કોર્ટના સમક્ષ પણ જાહેર થઈ છે કે જેમાં બેને નામદાર કોર્ટ સમક્ષ વિગતો દર્શાવતા કીધું કે બેન 16 સપ્ટેમ્બરે વડોદરા છોડીને જતા રહ્યા હતા અને પછી જ્યારે બેન પરત આવ્યા એમને પરત આવવા પાછળનું કારણ ફક્ત એટલું જ રહ્યું હતું કે એમને કોઈ અનનોન નંબર પરથી કોઈક અજાણ્યા નંબર પરથી એમને ફોટોગ્રાફ્સ એમના કંઈક મોકલવામાં આવેલા હતા અને ફોટોગ્રાફ દ્વારા એમને બદનામ કરવાના કોઈ પ્રયાસો કોઈકે હાથ ધર્યા અને એ જે મામલો થયો એ ફોટોગ્રાફ જે આવ્યા એના કારણે તેઓ ફરિયાદ કરવા માટે વડોદરા આવ્યા હતા અને જ્યારે ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા પોતે હિન્દી ભાષી છે, ગુજરાતી બોલી શકતા નથી, સમજી શકતા નથી, લખતા વાંચતા આવડતું નથી અને એટલા માટે જ પોલીસ સ્ટેશનની બહાર કોઈક 2 વ્યક્તિઓ એમને મળી અને 2 વ્યક્તિઓ પૈકી એક વ્યક્તિએ પોતાની ઓળખ કંઈક એડવોકેટ તરીકે આપી હતી અને એ બેને એમની મદદ લઈને એમને હિન્દીમાં બધું કીધું અને એ હિન્દી પરથી એમને એવું જણાવવામાં આવ્યું કે ગુજરાતીમાં
એ ભાઈએ બધું લખ્યું અને એના ઉપર એમને સહી કરી દીધી, પરંતુ એમને સ્પષ્ટ રીતે કોર્ટમાં જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે એમને જણાવ્યું છે કે એમની સાથે બળાત્કારની ક્યારે પણ કોઈ ઘટના ઘટી નથી. એમને અશોક જૈન સામે કે રાજુ ભટ્ટના વિરુદ્ધમાં ક્યારે પણ કોઈ પણ પ્રકારના કોઈ આક્ષેપો કરેલા નથી. હાજી, કોર્ટમાં બહુ સ્પષ્ટ રીતે જ્યારે એમને પૂછવામાં આવ્યું તો એમને કીધું છે કે એમની જોડે ક્યારે પણ કોઈએ પણ બળાત્કાર જેવી કોઈ ઘટના એમની જોડે ક્યારે બનેલી નથી અને એવી કોઈ પણ ફરિયાદ એમને બળાત્કાર બાબતની કોઈ આપેલી નથી.